उत्तम कुमार रेड्डी साहब मैं सुन रहा था, ही वाज सेइंग दैट कि 1 एकड़ भी ये कालेश्वरम के पानी से नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. Sir, when you say something, whatever the government is saying, it should reflect in the books. Sir, I am sorry to say, sir, when we see the demands, sir, page number 32, Kaleshwaram project technical details. टेक्निकल डिटेल्स. मैं देख रहा था सर कि बहुत देर लड़ाई हुई कि इसको मड्डी गड्ढा क्यों लाया गया, वो जगह पे क्यों नहीं रखा गया, इधर से सवाल हुआ, यहां से ये जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा वक्त लिए हरीश राव साहब ये जवाब देने के लिए. आई वाज नोटिसिंग सर, but when we see the page number 32, sir, Kaleshwaram project technical details, the following are the various objectives. Diversion of 195 TMC of Godavari waters to Sripada Yalampalli project and subsequently to Mid-Mane reservoir by lifting it to the land of higher contour which is found to be economically viable to bring large extent of land in the basin under irrigation. To create an ayakut of about 19.63 acres in 14 districts of Karimnagar, Rajanna, Sirsala, Jaktiyal, Nirmal, Pedapalli, Siddipet, Medar, Yadadri and all, sir. अब आप इसमें देखते हैं सर, ये बुक में बोल रहे हैं कि पानी से 1 इंच जमीन नहीं हुई, एक भी किसान को फायदा नहीं मिला. फिर ये बुक क्या है सर? ये सर, I really fail to understand. Shall I believe what the honorable minister has said, or I should believe the books which have been tabled in this house? सर, इसमें लिखा हुआ है करीमनगर में आयाकुत acres 800, stabilization acre 2,51,156, Rajanna Sirsala Ayakut acreage 1,66,199, stabilization 9,289, Siddipet 3,28,907. The total Ayakut is 19,63,360. Stabilization total is 18,83,375, sir. Further, if I have to go, sir, there are so many observations here, sir, 10 pages in the demand. So I really fail to understand as to what are we debating on. And why are we debating on, sir? When already the demands are there, and simply we waste the time, sir. So the Minister Saab says that the Kaleshwaram projects work were divided into 7 links and 28 packages to convey water to command area spread over seen erstwhile district of Telangana to component such as canal, tunnels, lift irrigation reservoir, distribution network, irrigation. Sir, honorable Speaker, sir, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता सर कि सही हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, करप्शन हुआ, नहीं हुआ, लूटने वाले लूटे, खाने वाले खाए, नहीं खाए. मेरा एक ही सवाल का जवाब दे दीजिए. क्या आप कालेश्वरम को अबैंडन कर रहे हैं क्या? If it is wrong, if it is bad, are you going to scrap that project, end that project, stop that project? अरे इसका तो जवाब दीजिए. सर, I mean, I would say that स्टेट का इतना पैसा उसमें लग गया है, अब हमको उसको सही करना है. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल्स को लाना है with which the distribution of water can happen through gravity. Are we going to stop this? Are we going to put this on hold? What are we going to do? I would like to ask Honorable Minister, my learned friend, you're talking about bringing waters to Musi also. Rejuvenating Musi. फिर आप बताइए ये पानी कहां से लाने वाले हैं सर? So through you my question is, why does the government not take up the repairs and maintenance work on the barrages and all other components of the project in the last 20 months, even while going for appointment of inquiry commission? Why didn't you go for the repair? 20 months हो गए सर, 20 महीना हो गया. और फिर मैं ये भी सुना था, पानी आएगा तो और पूरे पिलर्स को बहा के लेकर चला जाएगा, नुकसान हो गया, स्टेट का पैसा. सर अब तो कितना आ गया सर वहां पे? कितना पानी आ गया सर? 10 लाख क्यूसिक का वाटर है सर वहां पे. तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कमजोर है, जरा कुछ तो मजबूत है वो कि इतना पानी ले रहा है सर. सर हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है, और एक कमीशन में बिठा सकते हैं, हम उसको भी देख सकते हैं, जरूर. आई वेलकम दैट सर. I agree, sir, the Kaleshwaram project may have deficiencies and massive expenditure on the project construction may look excessive, but the project cannot be abandoned as a white elephant, sir. It cannot be abandoned, sir. And we shouldn't, sir.